I noticed, having worked with people for years and years, again and again and again, कि लोग जो होते हैं उनके जो 3 major issues होते हैं. There are three things. Okay, so the first is what I call dumbing. People act like dumb. They're, it's like in their mind they act like dumb. They don't think with their own mind. Let's put it more simply. Okay, so they have created a certain way of thinking, a pattern of thinking, a particular belief about themselves, a belief about their health, a belief about money, belief about relationships, and they're like tied with that, and they're not thinking anymore beyond, that perceived reality, and then living with that and believing what they believe, and thus they're dumbed inside. Okay, उस dumbing के पीछे क्या process होता है, ये एक अलग चीज़ है. ये I'll talk about that in the program, how people get dumbed, and we all are dumbed at in some way to certain extent. Problem ये होती है, जैसे मैंने कहा, कि हमें अपने patterns हमें खुद नज़र नहीं आते. So that's the first thing. People are dumbed to a great extent, and this is why people find it difficult and find themselves stuck in their lives. So dumbing is one thing. दूसरी चीज़ जो होती है वो like a lot of distortions that people have and distractions that people have, a lot of distractions and misdirections that people are going into. So distractions तरह तरह से हमारे साथ हो रही होती हैं. हम एक काम करना चाहते हैं, हम एक काम शुरू करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि हम मल्टीटास्किंग में लग जाते हैं, कोई दूसरी चीज़ आ जाती है. हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमने उस पर बड़े जज्बाती होके, बड़ी एक्साइटेड होके शुरू किया था, एंड देन वी फाइंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट सडनली अपीयर्स मोर अपीलिंग टू अस, एंड हम उस पहले को छोड़ के हम दूसरे की तरफ जाने लगते हैं. जैसे एक बच्चा है जो अभी खिलौने की दुकान में जाने से पहले वो जिद कर रहा था बाप से कि मुझे फलानी गाड़ी दिला दो. अब जब बाप उसको गाड़ी की दिलाने के लिए दुकान में लेके जाता है तो वहाँ पे उसको एक गन नज़र आ जाती है, एक टॉय गन. अब वो कहता है अब तो मुझे गन चाहिए. ओके, सो वो उसको जो पिछले कई दिन से गाड़ी के ऊपर उसका फोकस था वो हट गया, वो कहता है मुझे टॉय चाहिए. बिल्कुल इसी तरह से जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, इसी माइंडसेट के साथ, इसी पैटर्न के साथ बड़ा हो जाता है, तो अब वो कहता है जी ये प्रोजेक्ट करना है. अभी उसने स्टार्ट किया, अभी इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं था, एंड सडनली फाइंड्स ओह देयर इज दिस प्रोजेक्ट, दिस इज इवन मोर अट्रैक्टिव. Okay, sometimes that happens in relationships with people. Okay, so they have someone they find really attractive, really, they start thinking and making their mind, यार इसके साथ जिंदगी गुजारेंगे, ऐसा होगा. अभी स्टार्ट हुई थी जिंदगी and कोई दूसरा या दूसरी नजर आ गई. And that's how people do a lot of times. And then they feel overwhelmed, they feel, distracted, they feel demoralized, they feel lack of self-esteem, they feel a lot of problems, and they feel stuck, in their lives. So, dumbing, distractions, and doubts. Okay, अपने ऊपर शक, अपनी सलाहियतों पे शक, दूसरों पे शक, लोगों पे शक, मामलात पे शक. So people develop that and they start living with in doubts. Okay, so they do something, they want to do something, but एक doubt है, मैं नहीं कर सकता. दूसरा जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उसको आता है, मुझे नहीं आता. वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ. उसके पास ज़्यादा तजुर्बा है, मेरे पास नहीं है. Okay, and that doubt, so distortions, dumbing and doubts, ये 3 वो elements हैं. I call them the 3D's. Okay. There's another, 4th D. I'll talk about that perhaps. I'll talk about that in my program actually. But, people, because of these, they get into a lot of troubles in their lives.